Hello everyone, welcome to Avlokan IAS. So today we are moving forward with our case studies. In the previous video, we have already seen a case study and how to approach in the manner. Uh, also, there were few doubts related to the case studies that I saw among few students. First of all is how to make notes related to the case study. So in this, I think you should add keywords that can be used in the case study. For example, in dilemmas, what you use, okay, or some proverbs that can be used, plus thinkers or ideologies, approaches, that is, fact-based approach, objective approach, yeah, negotiation-based approach. These type of things should be added. Along with that, you can find the notes on case study of Apala Mishra ma'am. Her notes is very nice, related to all the keywords that I have told you. Okay, so you can refer to these notes, read it once, and make your own notes or edit in her notes as well. Okay, you can find the PDF or OneNote link from there as well. Also, you can see other case studies of toppers. Once you understand here that how to approach to case studies, you can also like see it from the other toppers as well. और जो भी आपको अच्छा लगे कि कोई वर्ड बहुत अच्छा है या फिर कोई स्टेटमेंट दैट यू कैन यूज इन योर केस स्टडी आप उसको वहां से ले सकते हो ओके सो मूविंग ऑन टू द टुडेज क्वेश्चन इसमें again we are taking the same approach. Please pause the video for a minute and read the question by yourself. And also, I'll explain you the crux of the case study. Okay. तो इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि देयर इज अ गर्ल नेम रीना और वो अपने दोस्तों के साथ कुछ किसी कंपनी में एक इंटर्नशिप कर रही है ओके बट जब वो वहां पर इंटर्नशिप करती है ऑल्दो इट इज अ वेरी रेप्यूटेड कंपनी द वाइस प्रेसिडेंट इज मेकिंग एडवांसेस नॉट एक्सप्लिसिटली बट इन एन इम्प्लिसिट वेज like being too friendly or being too like involved in her. So the co-workers and people around have noticed this and started making gestures against Rina, which she was not comfortable with and she did not like. Okay. So although now she has been employed for the full time, she is in a dilemma that what to do because people are making comments about her and she's not like too comfortable with the behavior of the vice president. So she should talk to her manager or not. The case study is about that. Okay. There are three questions. What dilemmas does Lena face? Then, what options does she have? Then, merits and demerits of every option has to be written and highlight the course of action that she should adopt with the justification for the same. Okay. अब dilemma हमें 5 to 6 लिखना है. Out of 4 pages, we have to make a thin structure of how we are approaching the answer. Okay. Then, option does she have? Merits and demerits. अब इसमें, this is the format to write merits and demerits, right? अब यहाँ पर आप अपनी चॉइस लिखोगे या मेरिट्स डिमेरिट्स लिखोगे तो इट टेक्स अराउंड 1.5 पेज. ओके देन द थर्ड पॉइंट इसके लिए भी आपको एटलीस्ट 5 से 6 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे दैट व्हाई यू आर टेकिंग अ सर्टेन पर्टिकुलर एक्शन. थोड़ा सा ये एक ब्लूप्रिंट अपने आंसर का बना के अगर आप रखोगे तो इट विल बी हैंडी टू यू व्हाइल राइटिंग द आंसर. आपको पता होगा कहाँ रुकना है और कहाँ से कौन सा पॉइंट स्टार्ट करना है. ओके फॉर दैट वी डू दिस. Now, moving on to the introduction. The rising cases of misuse of laws made for women have made women wary before before they accuse someone with such blatant laws. Means laws hai, but they women are fearful to hold their voice. Okay. तो इस पे इन्होंने ये जो इशू है इशू रिलेटेड टू द केस स्टडी ओके ये हाईलाइट किया है ना कि कोई लाइक एक्सप्लेन किया केस स्टडी व्हाट इज इट अबाउट और कुछ भी नहीं जस्ट द टॉपिक ऑफ द केस स्टडी इज बीइंग हाईलाइटेड इन द इंट्रोडक्शन दैट्स अ वेरी गुड अप्रोच यू कैन यूज इट इन योर आंसर्स आल्सो सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डायलेमास डज रीना फेस तो डायलेमास विथ रीना ऐसे ये जो ABC ये आपको डालना है ठीक है अपने जब भी आप आंसर की हेडिंग डालोगे. Does the VP has any bad intention or she is overthinking about it? Should she speak to the manager or to the
वीपी सेक्रेटरी। अब इसमें ना जो प्रोनाउंस होता है ना, और वर्सेस, ओके, ये प्रोनाउंस होता है। तो ये हमें डिलेमा में यूज करना है। बट जब इशू हाईलाइटेड वाला क्वेश्चन आता है, तब हमें ये प्रोनाउंस यूज नहीं करना है। प्लीज रिमेंबर दैट। ओके। इश्यूज हाईलाइटेड में हमें ओवरऑल मैक्रो व्यू देना पड़ेगा, सबके प्रॉब्लम, सबके जितने भी स्टेक होल्डर्स है ना, सबके बारे में लिखना पड़ेगा। बट इफ इट इज अबाउट डिलेमा, देन वी विल यूज स्पेसिफिकली दीज like pronouns. Okay. Should she indicate to the VP about the discomfort she is facing? How to manage the offhand comments by coworkers? What if any progress by her in her work is ascribed to VP instead of giving her due appreciation of her work? Okay, so these are the points she has written. अब इसमें भी she has given a very wide connotations, like the questions involved, okay, the thoughts involved, everything she has written here to make, like, making the thing holistic. Please remember this thing कि हम डिलेमा में भी यही चीज ऐड कर सकते हैं to make our answer more multidimensional. Okay. Moving to the second part of the question, options with three now. Do nothing about it, wait and watch. Okay. हमें हमेशा एक नेगेटिव, एक न्यूट्रल और एक पॉजिटिव, तीन टाइप के अप्रोच लेने हैं, और सबके लिए एटलीस्ट थ्री थ्री पॉइंट्स लिखने हैं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स में। ओके, दिस शुड बी द स्ट्रक्चर। और ट्राई करना, जैसे जो एक कॉमन सेंसिकल बात बताती हूँ, जैसे जो नेगेटिव चीज है, ठीक है, उसके मेरिट्स कम होंगे, डीमेरिट्स ज्यादा होंगे, है ना। तो ये चीज भी हम कर सकते हैं, जैसे इन्होंने डीमेरिट्स तीन लिखे हैं, मेरिट्स दो लिखे हैं। और जो पॉजिटिव चीज होगी, इसके मेरिट्स ज्यादा होंगे, डीमेरिट्स कम होंगे। तो ये एक चीज ना एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बनाता है आपके एग्जामिनर पे। ओके, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। मेरिट्स, वेट एंड अंडरस्टैंड VP's intention, good relation with office, crisis of conscience, the VP might take it differently, co-workers will accrue her all her success to her, no, knowing VP. Okay. Second is call the short talk to the manager, and third is speak to the VP directly. अब ये थोड़ा सा एक्सट्रीम में चला गया, राइट? एक्सट्रीमली हो गया। ये जो है ये न्यूट्रल है, ऐसा। Merits, crisis of conscience resolved will lead to some solution. Okay. Then demerits, she might lose her job or will come in bad light of manager. Okay. Then speak to the VP directly. She will be able to understand the situation better. Maybe the VP is unaware that he is making her uncomfortable, right? Then demerit, she might lose her job, will cause is will come in negative light. Okay. तो ये हैं। अब विल ट्राई कि हम तीन पॉइंट्स लिखते हैं आंसर में। शी हैज गिवन टू बिकॉज हर स्पेस allotment is quite wider than the normal allotment. Okay. Then fourth is she has written take legal course, complain to ICC. They will nip the VP's action in the bad itself. He hasn't done anything explicitly wrong. Rina might lose her job for a false complaint. Okay. ये कुछ ये फोर्थ चॉइस उन्होंने दे दी। वाइल राइटिंग थोड़ा सा हमें स्पेस का भी ध्यान रखना है, ताकि वी इंश्योर के जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको परफेक्टली जस्टिफिकेशन हम दे पाए, है ना। अदरवाइज ये थोड़ा हैphazard लगेगा कि एक क्वेश्चन को ज्यादा वेटेज दे दिया, दूसरे को कम दिया, इट डज नॉट लुक गुड। ओके, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देन थर्ड हेडिंग इज शी शुड अडॉप्ट option number third, and if that doesn't bear result, she should go for option number second. So there are very few toppers copy where we see this approach. Okay, you can try this. Like, she is a ranker, of course, so she must have done something practical writing this. So you can also try this in your case studies. कि जनरली जो लोग होता है ना, वो एक ही बताते हैं कि शी शुड टेक थर्ड अप्रोच, एंड उसके पॉजिटिव्स बता देते हैं। बट ये भी तरीका अच्छा है कि ये कर सकते हैं, बट अगर ये भी फेल हो गया तो ये कर सकते हैं। ओके, so that is a good way to write your answer too. The next, direct communication with the VP might make him realize that he's making her uncomfortable.
He might stop, okay, and if he doesn't, speak to the manager. Ask the manager to suggest a way out. Resigning of Reena is not an option. She can't let a monster roam freely. Okay, अब ये पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं ओवरऑल मेरिट्स डिमेरिट्स को सोच के, ठीक है। अब सी एथिक्स में ना क्या होता है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर वेरी रिलेटिव, ओके, रिलेटिव इन द सेंस किसी को वो सही लगेंगी, किसी को वो गलत लगेंगी, और बहुत ज्यादा स्कोप होता है एथिक्स में इनोवेशन का। जैसे उन्होंने यहाँ पे किया है, जनरली कोई होता है तो वो बताता है कि जैसे मैंने बोला कि ऑप्शन डी उनको लेना चाहिए और उसके रीजन बता देता है कि क्यों लेना चाहिए, ओके। बट ऐसे जो सेंसिटिव क्वेश्चंस आते हैं रिगार्डिंग वुमेन हरासमेंट, या फिर ऐसी डिलेमा है कि क्या करना चाहिए, व्हाट इज गुड फॉर्मल और इनफॉर्मल, तो यहाँ पे ये तरीका अच्छा है कि ठीक है, जैसा मैम ने लिया कि ये ऑप्शन भी ठीक है, अगर ये नहीं हुआ तो ये भी ठीक है, ओके। एक लॉन्ग टर्म कोर्स ऑफ एक्शन पता चलता है इससे, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। अब यही चीजें होती हैं जब आप टॉपर्स कॉपी देखते हो ना, तो यही चीजें कुछ होती हैं जो पता चलती हैं। क्योंकि जनरली जब आप कोई भी मॉडल आंसर्स वगैरह देखोगे पीवाईक्यू के या कोई भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज के, यू वोंट फाइंड दीज थिंग। इनोवेशन जो ह्यूमन टच होता है ना, वहीं से आता है, ओके। तो ये चीजें आपको अपने में ध्यान रखनी है। इसके बाद भी हम बहुत सारी टॉपर्स कॉपी देखेंगे, बहुत सारी तो नहीं, मतलब वी विल कवर टॉपर्स कॉपी ऑफ सम अदर टॉपर्स एज वेल। तो उनका भी अप्रोच देखेंगे कि केस स्टडी में उन्होंने क्या अप्रोच लिया है, एंड इफ समथिंग न्यू एंड इनोवेटिव इज देयर वी विल टेक इट फ्रॉम देयर, ओके। Moving on to the conclusion, thus such cases are becoming abundant due to lack of training to men about what behavior is justified and what is not and should be targeted training in office. Okay, थोड़ा सा haphazard introduction हो गया. It's not making like too much sense. But if we have to write, we can also write that जो हम कंक्लूजन लाएंगे, वो कंक्लूजन थोड़ा सा एथिकल टर्म्स पे बेस्ड होना चाहिए, ओके। तो इसमें क्या आएगा, रिस्पेक्ट टू द अदर जेंडर, इक्वालिटी, ओके, इक्वल अपॉर्चुनिटी, दीज थिंग्स विल कम इन प्लेस, वैल्यू सिस्टम। कोट अगर ऐड करना है तो कोट स्टार्ट हम ऐसे कर सकते हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम, है ना। इसका वो क्या होगा, कंटेक्स्ट ये होगा कि द पेरेंट शुड टीच देयर किड्स हाउ टू रिस्पेक्ट द अदर जेंडर। उसको थोड़ा मैन विमेन सेंट्रिक मत बनाना, इक्वलाइज करना दोनों जेंडर्स को, कि मेन को भी सीखना चाहिए और वुमेन को भी सीखना चाहिए हाउ टू रिस्पेक्ट द अदर जेंडर। ऐसे करके थोड़ा सा आप कंक्लूजन और बेटर कर सकते हो, ओके। सो दिस वाज केस स्टडी फ्रॉम मेधा आनंद मैम कॉपी, और इसके बाद हम एक और टॉपर की कॉपी लेके आपको बताएंगे कि हाउ टू डू इनोवेशंस इन केस स्टडी और व्हाट अप्रोच टू टेक एज वेल, ओके। जो मैंने आपको नोट्स का बताया पाला मिश्रा मैम का, प्लीज डू चेक इट वंस, मे बी यू विल फाइंड इट बेटर टू इंक्लूड इन योर नोट्स एज वेल, ओके। So thank you. And if you have any doubts, please write in the comment section below. And please like, subscribe, and share our videos if you think they will be helpful to others as well. Okay. Thank you and have a very good day.